Your Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, Your Excellency Dr. Lote Tshering, Honorable Prime Minister of Bhutan, Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India, Dr. Tandi Doji, Minister for Foreign Affairs of Bhutan, Shri Ajit Doval, National Security Advisor, Government of India, Dr. P.K. Mishra, Principal Secretary to Prime Minister of India, Shri Harshvardhan Shringla, Foreign Secretary of India, General V. Namgyal, Ambassador of Bhutan to India, Mrs. Ruchira Kamboj, Ambassador of India to Bhutan, distinguished delegates of the Government of India and the Royal Government of Bhutan, ladies and gentlemen, a very good morning. I'm Namgye Chodan from the Ministry of Foreign Affairs of Bhutan. I have the honor to welcome the distinguished delegates from the Government of India and the Royal Government of Bhutan to today's e-launch of the second phase of the RuPay card. The RuPay card initiative between Bhutan and India was conceived in June 2017 with the aim of facilitating safe and convenient cross-border digital payments between the two countries. This initiative is being executed under two phases. The first phase of the RuPay card was launched during His Excellency Shri Narendra Modi's state visit to Bhutan in August last year. Under phase 1, RuPay cards were distributed to Indians by banks in India for use at ATMs and point-of-sale terminals in Bhutan. Similarly, under phase 2, banks in Bhutan will issue RuPay cards to Bhutanese for use at ATMs and point-of-sale terminals in India. Today's program will start with the pre-recorded video on the launch of the RuPay card, followed by the unveiling of the digital plaque and remarks by Honorable Prime Ministers of India and Bhutan. Without further ado, I would now like to request for the playing of the video on the launch of the RuPay card. The decades-old relationship between Bhutan and India was further consolidated during the Prime Minister Shri Narendra Modi's visit to Bhutan in August 2019. The early visit of Prime Minister Modi to Bhutan underlines the priority India attaches to Bhutan and regional cooperation. Prime Minister Modi also chose Bhutan for his first overseas visit in June 2014. Likewise, Prime Minister Dr. Lote Tshering visited India for his first overseas visit in December 2018. This underlines the importance of India and Bhutan's relationship. During the visit of PM Modi to Bhutan last year, facility of use of Indian-issued RuPay cards was jointly launched by Prime Ministers of both countries. And now, National Payments Corporation of India and Royal Monetary Authority of Bhutan are further deepening the mutual cooperation and digital economic trade relations, whereby RuPay cards issued in Bhutan by the RMA banks to students, businessmen, workers and tourists coming to India will be accepted at point of sales and at ATMs in India. RuPay is an indigenous card network scheme from India, offering exciting deals, discounts and offer on credit, debit and prepaid cards. This service will be jointly launched by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, with Honorable Prime Minister of Bhutan, Dr. Lote Tshering. Another step forward together. We will now proceed to the unveiling of the digital plaque for the launch of the second phase of the RuPay card. For this, I have the honor to request His Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, and His Excellency Dr. Lote Tshering, Honorable Prime Minister of Bhutan, to jointly unveil the digital plaque. Thank you, Your Excellencies. I would now like to request Your Excellency Dr. Lote Tshering, Honorable Prime Minister of Bhutan, to deliver your remarks. Give it to you. Your Excellency
Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I would like to convey the warmest greetings of His Majesty the King to Your Excellency, your distinguished friends in the government of India. As friendly nations, and more so for those of us who are connected at heart, we do not need functions and formalities to stay in touch with each other, which is why the event, even though it's virtual, I feel so warm and cordial. It is an honor for me to launch the second phase of RuPay card with Your Excellency and your team. I fondly remember the launching of the first phase during your visit, which was at Semtokazong. It was the place where Your Excellency had a short stint of meditation. I'm happy to note that with these arrangements, it will benefit the peoples of our two countries. Together, we are leveraging digital technologies to enhance financial services in our region. I would like to take this opportunity to convey our appreciations for your unwavering support that we have extended to Bhutan for the COVID-19 responses. This is highly appreciated as we know that India is confronted with similar tasks but at much bigger scale. Your Excellency's leadership in tackling the pandemic at home is highly commended. I'm sure India will come out much stronger from the pandemic. Furthermore, the lead that India is taking in developing vaccines is a source of hope for all of us. We are thankful to you and your government for the assurance to make vaccines available for Bhutan once they are ready for clinical use. Your Excellency, I'm happy to note that a MOU has been signed between the two counterparts for cooperation in space sector. This new era of cooperation between Bhutan and India is an important step towards realizing His Majesty's vision. For an astute 21st century king who is well informed of all the modern details, it will be His Majesty's delight to see our young Bhutanese grow with relevant knowledge and skills in space science and technology. I'm also pleased with the progress that we have made towards establishment of the third international internet gateway. I'm following up closely with the ambassador here. I would like to acknowledge Ambassador Ruchira's effective leadership. I know that she places huge importance to the agenda of the two countries and works hard towards strengthening our relationship further. We also would like to take note of the high-level visits that we had so far. Thank you for extending invitation to our foreign minister last year around this time. We are also happy to have hosted Your Excellency Dr. Jai Shankar during your maiden visit to Bhutan, and also the Commons Minister, His Excellency Mr. Piyush Goyal. We are closely following up with the deliverables from their visits, and I would like to seek Your Excellency's support in realizing them. Here, although it doesn't merit any mention, as Your Excellency has already committed, but for my own satisfaction, as a subject that is very close to my heart, the multidisciplinary hospital has reached the final stages. I would like to thank you and seek further support on this. While we continue to work together in these times of pandemic, I offer my prayers for the good health, well-being, and prosperity of the peoples of our two countries. Once again, I would like to express my sincere appreciation to Modi ji and your distinguished delegates from the Government of India and my friends here in Bhutan for taking part in this e-launch. Thank you very much, and Karin Che. Thank you, Your Excellency. I would now like to request Your Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to deliver your remarks. Your Excellency, Leon Chen, Dr. Lote Shering ji, भूटान और भारत से जुड़े सभी विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। सभी भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए विशेष प्यार और मित्रता है, और इसलिए जब भी आपसे मिलता हूं, एक खास अपनेपन की अनुभूति होती है।
भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध, हमारी विशेष मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमूल्य है, बल्कि विश्व के लिए एक बेजोड़ उदाहरण भी है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मृतियों से भरी पड़ी है। एक प्रकार से एक एक मिनट कोई न कोई नई घटना, नया उमंग, नया उत्साह, वो यात्रा अपने आप में बहुत ही यादगार थी। हमने अपने सहयोग में डिजिटल, अंतरिक्ष और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की थी। 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये कनेक्टिविटी के एक प्रकार से नए सूत्र होंगे। मेरी भूटान यात्रा के दौरान हमने दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड परियोजना के पहले चरण की शुरुआत करी थी। इससे भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्ड से भूटान में भुगतान करने की सुविधा मिली थी। मुझे ये जानकर खुशी है कि भूटान में अब तक 11,000 सफल रुपे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अगर कोविड-19 महामारी न होती तो ये आंकड़ा अवश्य ही इससे भी बहुत अधिक होता। आज हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और इसके साथ हम रुपे नेटवर्क में भूटान का एक फुल पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हैं। इस उपलब्धि के लिए जिन भूटानी और भारतीय अधिकारियों ने परिश्रम किया है, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड्स के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। एक्सेलेंसीज, फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर हमारे बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दूसरा क्षेत्र है। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सदैव विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। भारत और भूटान इस उद्देश्य को साझा करते हैं। पिछले वर्ष मैंने भूटान में साउथ एशिया सैटेलाइट के उपयोग के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया था। मुझे खुशी है कि इस स्टेशन की मदद से भूटान ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया सैटेलाइट का और प्रभावी उपयोग कर पा रहा है। कल हमने पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क
दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे। मैं इन चारों नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं जानता हूं कि हिज मैजेस्टी भूटान नरेश अपने देश के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना मन से काफी इच्छा भी रखते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं, और उनका अपना एक विजन है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए भारत अपना अनुभव और अपनी सुविधाएं साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। इसी तरह भूटान में एक आईसीटी एनेबल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इसका निर्माण करने के उद्देश्य का भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं भूटान के लिए 3rd इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं। एक्सेलेंसीज, फ्रेंड्स, वैसे तो अच्छा होता कि अगर हम इस खुशी के अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के, साथ में मिलकर के एक समारोह के स्वरूप में इस अवसर को मना पाते, लेकिन कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो एक तरह से यह उचित भी है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन इनिशिएटिव्स का उल्लास भी हम टेक्नोलॉजी की ही मदद से बना रहे हैं। भूटान की जनता और सरकार ने कोविड के संकट से निपटने में जो धैर्य और अनुशासन दिखाया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की मेरी तरफ से 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से मैं आप सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य की और सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कठिन समय में हम भूटान के साथ खड़े हैं और आपकी आवश्यकताएं हमारे लिए सदैव उच्चतम प्राथमिकता रहेगी। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और रॉयल फैमिली के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हुए ताशी देलक। Thank you, Your Excellency. With this, we have come to the end of the program for the e-launch of the second phase of the RuPay card. I would like to express our sincere appreciation to Your Excellency Shri Narendra Modi, Your Excellency Dr. Lotte Tring, distinguished delegates from the Government of India and the Royal Government of Bhutan for your kind presence at the historic event today. Thank you and Tashdele. That's Prime Minister of India Narendra Modi and Lotte sharing of Bhutan. The Prime Minister here spoke about, in his address, he spoke about his cherished memories about the Bhutan visit and his feeling of love and friendship towards the country.
एक्सेलेंसी नमस्कार। Hello, my friend. एक्सेलेंसी नमस्कार। सबसे पहले मैं कोविड-19 महामारी से लग्जमबर्ग में हुई जानहानि के लिए मेरी तरफ से 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं।